Spark is a 360-degree sports platform wherein we provide services for anything you need in sport, which works in creation of leagues, which works in operation, venue management. Spark managed the entire Rajasthan Royals operations on their own. Spark is because of the team. We have all these head of the department. Not only they are expert, but also all the team members, they have worked equally hard. I mean, it was a challenge to put up the stadium in its current form and in such a small duration, which included all the construction, all the decoration, all the branding. Regarding the season for IPL 2024 for Rajasthan Royals, so we are basically the exclusive agency for them, for Jaipur. We manage the whole stadium for them. While making these stadiums, there was a big challenge with us, which was the time. So when we were planning this whole structure to come up, so we had 45 days timeline, but we had to make it in 25 days. So that was big challenge for us. इतना सारा काम था कि at one point ऐसे लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होएगा. So it's a whole zero ground where we create 2 mezzanines. अदर स्पोर्ट्स की एकेडमीज हैं इनसाइड द स्टेडियम, तो उन लोगों को डे बाय डे प्रोसेस है उसको रोकना बहुत चैलेंजिंग होता है. We got 15 to 20 days to do everything. वो लोग खाना खाने का भी किसी के पास टाइम नहीं है. We plan the menu in a way that we ensure that the food boxes, the food doesn't go stale. जैसे क्राउड आता है वो उनके एंगल्स को छेड़ देता था. कई बार हमारे जो वायर्स थे, फाइबर्स थे, वो कट जाते थे. हम एक बार में अप्रॉक्स 180 प्लस वेंडर्स को डील कर रहे हैं. तो द हाईलाइट फॉर मी इन दिस सीजन वाज द हॉट एयर बलून. अगर हवा तेज चलती तो हम उसको उड़ा नहीं पाते. जो मेन चैलेंजेस थे साउथ में, तो बेसिकली हमारे वॉशरूम्स थे जो शायद कब रिपेयर हुए थे, कब क्या हुई थी, चीज़ें कुछ पता नहीं था. सो रिफिलिंग इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. पीपल आके दे गेट डिहाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ द सन. काम इतना सारा था और दिन कम थे, बट फिर भी हम लोग ने पूरी रात दिन सुबह स्टेडियम में रह के पुल ऑफ करने की कोशिश की है. एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज. आई रियली होप कि आज मैं ऑफिस आऊँगी और कोई चैलेंज नहीं होगा. So we started with the snag list. We did a lot of work in snag. We refurbished the whole stadium in a different new way. We've painted the whole seats pink, if you can see on the background. So we make 2 of our own infrastructures, which is a hectic job here basically, because in this infrastructure wise the stadium is not that great. So we have to add that in for the stadium. Branding started in the very beginning, but to actually put it up is a way more different story than just on visualizing it on a laptop and making it, but actually putting it together is a very difficult task. So जहाँ डिज़ाइन ड्राफ्ट्स या क्रिएटिविटी का पैरेलल काम हो रहा था, वहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का फ्लोर प्लान और ग्राउंड वर्क भी हो रहा था. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोसेस एंड एक्चुअली बिल्डिंग इन द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, इट वॉज बेटर फॉर अस टू विजुअलाइज इन 3D की क्या चीज़ कैसे बनेगी, हमारे पिलर्स कहाँ आएंगे, कितना एरिया हमको ग्लास वर्क में कवर अप करना है, कितना एरिया हमको मास्क या हाइड आउट करना है फॉर आवर सर्विस एंट्रीज और द एरियाज दैट वी डोंट वांट टू शो ऑन कैमरा. Look and the feel of the stadium in a way that we've named the whole stadium on the names of cities of Rajasthan. The 2 lounges, Jodhpur, Jaipur and Jaisalmer were sitting in the same wing, just northwest and southwest, and इस respectively उन दोनों के lounges थे. हमारा इंस्पिरेशन मेजरली वही था कि हम जो सांगानेरी स्टाइल ऑफ आर्ट है उसको क्रिकेट के साथ फ्यूज़ करें और उन मोटिव्स को हमने रिप्रेजेंट करा है इन लाउंजेस में. इन दोनों के बीच में मेन डिस्टिंक्शन है कलर. सो अगर आप जयपुर की तरफ जाएंगे तो आपको पिंक कलर डोमिनेंट दिखेगा बिकॉज जयपुर इज़ अ पिंक सिटी. आप जोधपुर लाउंज की तरफ जाएंगे तो आपको वो पूरा स्ट्रक्चर ही ब्लू अंदर से फील होगा बिकॉज जोधपुर इज़ अ ब्लू सिटी. As the theme itself says Jodhpur, so we took the color blue with blending of Sanganeri block print, florals जो राजस्थानी मोटिव्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और क्रिकेट, इन तीनों को फ्यूज़ करना था. तो हमारा सारा आर्ट वर्क, मिरर वर्क, पिलर पे बैट का जो भी आर्ट वर्क है, नक्काशी है, वो सब उसी में से इंस्पायर होकर हम लोगों ने क्रिएट किया था. We had to ensure that it does feel like our home stadium because we've done this so many times. We didn't really know what to go for initially, but then we went ahead with this idea of a crown gate, which then leads up to this centerpiece of the RR logo rotating along one axis, and we have 2 big LED screens where we play the Rajasthan Royals Foundation related content. सबसे पहले आता है प्लेयर्स टनल, जिसमें से वो गुजर के जब भी जाते हैं तो एक और छोटी सी रूम आती है, एंड देन उसके बाद आता है ड्रेसिंग रूम.
ड्रेसिंग रूम के चैलेंजेस मेजरली ये थे कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी ब्राइट एंड लाइवली इनफ फॉर देम टू फील happy. It should not be too dark and gloomy. That was the biggest challenge that we were trying to address initially. Talking about Chain 1 gallery, so that's the outer seating. उससे half floor नीचे आते ही we have this buffet space, the dining space, जो इस साल BCCI को दिया था. So उस lounge का look and feel was pre-defined and pre-designed by them itself. उन्होंने all throughout the stadiums, जहाँ पे भी IPL हो रहा है, same ही तरह का look and feel किया, respecting what the wall faces are. साउथ में ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास लॉन्ग रूम था. उस रूम का एक चैलेंज ये था कि उस रूम में डायरेक्टली कोई लाइट नहीं आती है, तो वॉल पे एक सिंपल सैंडविन का पैटर्न लेकर उसमें इनलेट लाइट्स करके और एक आर्ट वर्क जो राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट और उनके कुछ एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हुए एक वॉल उसको डेडिकेट किया था. वेस्ट एंट्रेंस पे देयर इज एन इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर विद 3 अपराइट पिलर्स एंड 4 डायगोनल पिलर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. प्रेसिडेंस बॉक्स है वो, उसके अंदर का ब्रांडिंग technically camera facing hota hai, so we have a certain guideline that we have to follow whenever it comes to like broadcast specific branding. Before the first match, we had to do the civil work, we had to repair all the ACs, we had to paint the whole stadium. It was a huge task. Every single department that's needed to get the stadium ready comes under operations. Every day is a new challenge. I really hope कि आज मैं ऑफिस आऊँगी और कोई challenge नहीं होगा, but I think there has been no day ever since I've joined that we've not had issues. The issue could be with a department, the issue could be with the vendor. Because we were doing the whole thing, we could know what time the snag list is finishing, and accordingly we could plan our own things. I'm kind of the bridging gap between all the parties that are involved to make sure everything works together, everybody is aligned together, and so that we can deliver an excellent experience to everybody involved. That work for Spark, they come from all different parts of the country. Some people join in January, some people joined in March, and at various points. We were supposed to have 27 people on our core team, but we ended up with 43. So by then I think it helped, because with extra responsibilities that were given to us, we could fulfill it only because of the team that we had. Operation as a whole is nothing without the team. Every single department comes together to put operations together to deliver the tournament. Primarily branding, production, housekeeping, medical is important, safety measures need to be taken, make sure the ground is clean, so housekeeping needs to be done. ये बिल्डिंग में और साउथ बिल्डिंग में और पूरे कॉन्कोर्स में इतना सारा काम था कि at one point ऐसे लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होएगा. The electricity board gives temporary connections in different places, and we have our own junction boxes. We have placed around 25 junction boxes. As you can see, 2 huge structures have been built. So for their AC, lights, other requirements are given by generators. So it's a whole zero ground where we create 2 mezzanines. Then apart from that, we create bleachers, around 1000 seats per bleacher, where they have their food inside the mezzanine, and on the upper zone there are owners. In all, overall, the stadium consists of 18,000 seats, but we built a temporary seat structure of around 7,000 seats. So overall capacity what we give is 25,000 seats. जब ये स्ट्रक्चर खड़ा होने से पहले जो फुटिंग और डिगिंग हो रही थी, फुल नाइट हम लोग स्टेडियम में ही थे. इसको सबको टैकल करना एक चैलेंज था हम लोग के लिए. सबसे बड़ा टास्क तो यही था कि वर्कर्स के पीछे रहना. काम इतना सारा था और दिन कम थे, बट फिर भी हम लोग ने पूरी रात दिन सुबह स्टेडियम में रह के पुल ऑफ करने की कोशिश की है. The most challenging part was we got about 20 days to build this structure. स्क्रैच से हम लोग जो भी कर रहे हैं सब स्क्रैच से किया है. वेस्ट के फर्स्ट फ्लोर पे 16 कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए हम लोग ने. There's a lot of repairing work, installation work like glasses, sanitary, ACs and all. So that is what we were looking after initially. जो main challenges थे साउथ में, तो बेसिकली हमारे वॉशरूम्स थे जो शायद कब रिपेयर हुए थे, कब क्या हुई थी, चीज़ें कुछ पता नहीं था. The concourse of the SMS Stadium is one of the biggest concourse in India. That covers around 1 lakh square feet of branding. So we create tin barricading outside the concourse where we place your sponsor boards.
We got 15 to 20 days to do everything from Reiki to make designs, to do installation, to do everything, production and all. We faced challenge somewhere. हमने manage किया कैसे भी करके. First match तक हमने जितना हो सके हमने पूरा ट्राई किया. इस साल कुछ नया किए, जैसे मैश लगाया हमने, कुछ शेन वॉन का बैरिकेड्स ब्रांडिंग किए. इस बार टनल जो हमने बनाया कुछ अलग तरह से बनाया, जैसे राजस्थान रॉयल का क्राउन है वो हमने एज अ गेट इंस्टॉल किया. हमने वेस्ट इंस्टॉलेशन कुछ एकदम अलग बनाया, जर्सी को हमने डेडिकेट किया पूरा. सो ये सब चैलेंज फेस हुआ. हमें पास टाइम कम था बट हमने ये सब करके दिखाया. हमने एक ईस्ट स्टैंड में मैनुअल स्कोरबोर्ड के पीछे एक मैश किया. शेन वॉन को बेसिकली हमने डेडिकेट किया वो पूरा एरिया. सो दैट वाज द गुड पार्ट फॉर द स्पेक्टेटर टू क्लिक द पिक्चर्स एंड ऑल. There are 32 inner gates from where basically the stadium starts. The concourse area ends and the stadium starts. We had to brand all 32 inner gates. With the help of design team, we were able to achieve aesthetic, bat-looking inner gates which had custom names of each and every stand. इस बार वेस्ट इंस्टॉलेशन हर साल गेट बनाते थे. दिस ईयर हमने तीनों अपनी जर्सी है, ट्रेनिंग जर्सी, इम्पैक्ट जर्सी एंड प्लेइंग जर्सी को हमने पूरा उसमें दिखाया और उनके जर्सी एलिमेंट को हमने पूरा डेडिकेट किया. प्रॉपर जर्सी का हमने पूरा वो इंस्टॉलेशन बनाया. वो भी एक अच्छा इंस्टॉलेशन था दिस ईयर. और दिस ईयर वी गॉट 3 to 4 days टू इंस्टॉल आवर कॉन्कोर्स बोर्ड. कॉन्कोर्स बोर्ड बेसिकली इट्स लाइक कि हमने कुछ स्पॉन्सर को कॉन्कोर्स बोर्ड दिया हुआ है एंड हम खुद एक हमारा प्लेयर्स इमेज हम करते हैं, कुछ इनका इम्पैक्ट जर्सी की स्टोरी का. ये सब कॉन्कोर्स बोर्ड बेसिकली 20x6 का होता है पूरे कॉन्कोर्स में. and we did something 350 360 boards हम install किए total 3 to 4 days में. Sponsorship requires a lot of coordination at the end. You coordinate with the sponsors, what they want at the stadium, how they want it at the stadium, everybody, and it's 14, 15 sponsors who everybody has a different idea coming into the venue. One sponsor will want a board like this, another sponsor will want a board like this, a sponsor will want their activation to be a specific area, the other want to be at another specific area. So from operational point of view, I collect all of them, I make them into a ball and make sure everybody is placed at the right place and everybody is happy about it. I'm hoping Broadcast is super happy this season because whatever they asked for, we gave it to them. Before every season, they make their own recce report. So once we get that report, our whole team works on that report. We make sure that it's done before the first match begins. Even after the first match, there were few things that they wanted. For example, where we are standing, the poles, the structure, they wanted to be moved a bit. So our team had the discussion and we provided them with the solution. We've changed a lot with the entertainment stage, obviously. We have made the entertainment stage in a container and we have moved out that container outside of the periphery and it is still inside of the stadium. We created a base where we kept 3 containers and the third container is the entertainment part where we cut it down to a window, we created a glass wall, LED all over, put it inside a AC, lights and everything. So this was the best innovation we had and everyone liked it. So initially for the first 2 matches, if you all would have seen, there was no extension. It was just the containers. So there was a task with bringing up the guests for the trivia. Coordinating and managing on match day the cheerleaders and entertainment is not that easy. As such, for entertainment you can't leave the stage. So standing there and managing both of them, there were issues but that got resolved. So for the entertainment, I have to coordinate with the entertainment managers from BCCI. Then I have to look after the DJ, MC, their coordination part. Then given your sound stacks that's there at the FOP as well as a PA system that's there outside your dhol. The new other innovation which we did was with the dressing room because again we had the full access to it this season. That is very good. I think it's great. I think fan activation team has done a great job this season because we have done several different fan activations this year. So the ball you see here, this was kept in the West. So this is a tribute to the late great Shane Warne, who was arguably the world's greatest spinner ever. भाई जैसे कि आप सभी ने देखा राजस्थान रॉयल्स अपने फैंस के लिए ये हमारे शेन वॉर्न जो लेजेंड थे, फॉरएवर द फर्स्ट राजस्थान रॉयल्स
तो गाइस ये बॉल है, इसको 3 सेकंड बाद घुमाना आपको 3 बार में. So in the east side of the stadium we had an RRF zone where we had a kawad, the jigsaw puzzle and a signboard. The basic aim of this activation was to enhance the lives of the local and rural women of Rajasthan. So this year we have focused on a lot of innovative activities such as the AR photo booth, the hot air balloon, the cricket on wheels and many more. Let me talk about the AR photo booth where fans could actually come, click a photo with their favorite players and take that photo home with themselves. सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमने एक बस तैयार करी थी जिसका नाम था क्रिकेट ऑन व्हील्स. तो उस बस में एक VR क्रिकेट हमने गेम सेटअप किया था और टुक इट टू डिफरेंट सिटीज़ इन राजस्थान विच वॉज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर. सो हर मैच में अराउंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 12,000 फ्लैग्स अराउंड द स्टेडियम. ये थोड़ा मेटिकुलस टास्क था क्योंकि हर स्टैंड में फ्लैग डालना तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है. तो आई हैड हेल्प फ्रॉम वॉलंटियर्स एंड माई कॉलीग्स. So the favorite moment this season for me was when the hot air balloon actually lifted up. We thought it would never happen because there were a lot of challenges in between, such as the wind, the height, the permissions we wanted to get and we went through. But then it did go up. The moment it went up, I could see the entire stadium looking at the balloon. Even the players couldn't resist to look at it. On every match day we cater around 7,000 to 8,000 people. It's a big challenge. It is not like a one-man army kind of a thing. It's a whole team that's involved, from the designing, from planning to the caterers, to the hospitality team, and the support that we get from the operations team of Spark on match days, because we have a lot of people that we cater to on a match day. There's a lot of R&D that we do. We look for caterers around. We speak to multiple people. We plan the menu in a way that we ensure that the food boxes, the food doesn't go stale. Structures are made to cater the guests. If you go inside and check the way we have portrayed the hospitality areas in terms of buffet layout, housekeeping team, or you can see the catering team also, it's one of the best I can say in 12 franchise. Every day is a challenge. Every day different 20,000 guests come for every matches. Catering food for 8,000-9,000 people is not an easy job. Making sure everyone gets the food on time also, it's a big task. In Rajasthan, if you see, it's 40-45 degrees like normally in the month of April and May. We have to make sure we have chillers, we have fridge on 2 hours prior to the gate opens. The water inside the stadium is free. That's the initiative taken by IPL. अवे टीम का जो स्टॉक आइस रिक्वायरमेंट्स रहता है, हैंडल दैट. होम टीम का ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी में जो स्टॉक्स रहता है, अपना जो फ्रिजेस वगैरह लगते हैं वहाँ पे जो स्टॉक रहता है, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनीथिंग दैट गोज इन द हॉस्पिटैलिटी साइड, आई हैंडल इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, टीम्स में वी गिव आइस, दैट इज फॉर आइस बाथ वगैरह जो प्लेयर्स को रिकवरी के लिए लगता है. सो वी प्रोवाइड आइस बॉक्सेस टू द ब्रॉडकास्ट टीम एज वेल. सो एज यू नो, आवर होम ग्राउंड इज इन जयपुर, एंड जयपुर बीइंग इन राजस्थान इज अ वेरी हॉट सिटी. सो यहाँ का मेन चैलेंज इज रिफिलिंग द स्टॉक, बिकॉज पीपल आके दे गेट डिहाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ द सन. FOP पे जो चीयर लीडर्स रहती है, ऑफिशियल फोटोग्राफर्स रहते हैं, वीडियोग्राफर्स रहते हैं, सो दे आर कंटिन्यूसली ऑन द फील्ड, सो दे आर डायरेक्टली अंडर द सन. तो उनका जो आइस वगैरह है वो रिप्लेनिश करना इज वेरी डिफिकल्ट. नॉन मैच डे सिक्योरिटी वी हैव टू डू, CCTV we have to do, internet we had to do. I'm doing 3 types of security, one non-match days, match days and practice. So basically non-match days आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कॉन्कोर्स और इतना बड़ा स्टेडियम है सेंटर ऑफ सिटी, तो बहुत चैलेंजिंग होता है. यहाँ पे अदर स्पोर्ट्स की एकेडमीज़ हैं इनसाइड द स्टेडियम, तो उन लोगों को डे बाय डे प्रोसेस है उसको रोकना बहुत चैलेंजिंग होता है. तो उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में या वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर इतना बड़ा बनता हो और उसमें जो लेबर इन्वॉल्व हैं और जो सामान जो है कि काफ़ी कीमती सामान आता है, तो उन सब की सिक्योरिटी करना वो एक चैलेंजिंग है. If we talk about SMS Stadium Jaipur, then it is not just a cricket stadium. It is like multiple sports. Football is there, volleyball. All the sports are there. Lots of vendors are working here and there. Broadcast teams are coming. So it is quite difficult in this scenario managing the security of players as well, because that is of utmost importance to us. Temporary structures they are really big and very difficult to be made. So we have to take care of them. तो मेरे पास सिर्फ एक वीक था जहाँ पे मुझे प्लान देखना था, मुझे पूरे ग्राउंड की रेकी करनी थी, समझना था कहाँ पे क्या कैमरास लगाने हैं, मुझे CCTV जो नई टीम आई थी उनसे इंटरेक्ट करना था, उनके साथ बैठ के प्लान को डिस्कस करना था. यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि जब मैच स्टार्ट होता है तो कई पोजीशंस कैमरों की ऐसे थी जहाँ पे हम नहीं लगा पा रहे थे, कवर नहीं कर पा रहे थे. फील्ड ऑफ प्ले में 100 कैमरास लगाए, अब उनको मैनेज करना, उनको एडजस्ट करना, एंगल्स बैठना,
वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी हमारी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच। जैसे क्राउड आता है वो उनके एंगल्स को छेड़ देता था, कई बार हमारे जो वायर्स थे, फाइबर्स थे, वो कट जाते थे, तो काफ़ी चैलेंजेस हुए थे इनिशियल मैचेस पे। ओवरऑल हमने 300 कैमराज लगाए अलॉन्ग विथ 8 PTZ। I would actually thank a lot to my accounts team because we are managing around 130-140 vendors. हम एक बार में अप्रॉक्स 180 प्लस वेंडर्स को डील कर रहे हैं। पब्लिक को सब इतना हैपनिंग नज़र आता है कि यहाँ मैच चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, किसकी कितनी मेहनत है, कितना किसको टास्क मिल रहा है, किसको कितनी प्रॉब्लम्स इश्यू करनी पड़ रही है, वो तब पता चलता है जब आप उस चीज़ का पार्ट बनते हो। ब्रांडिंग है, एंटरटेनमेंट है, LED लाइट्स हैं, फूड है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं स्टेडियम पे, ये सब लोग हम डील कर रहे हैं। The whole team did a very great job. We worked 24/7 for like first 15 days, then we took 5-6 day rest, and then again before the first match we were working 24/7, the whole team. You cannot succeed without a team. Teamwork is the most important. If you don't have a good team, you would not succeed. It's my good luck that I have a great team who's working 24 hours tirelessly to make sure that the things are all in place. I have two great partners in my company. One happens to be my wife and one happens to be my kind of a younger brother, which is Jayesh and Priyanka, who are the partners, and they've been a great support to me. Our people were on the edge. They were like very much in stress and in pressure, and they were like on the verge of giving up. But then Rajiv was always there, Jayesh was always there, I was always there for them and to cheer them up. In this team, everyone is there for each other. They don't let the other one fall and wait for that person to make mistake. That is the beauty of this. So in the whole of success of IPL, I think majorly it goes to Rajiv sir, because I don't know how, but he managed everyone, everything from top to bottom so easily and comfortably. Also, why we are also able to manage the stadium and everyone easily, because what he has done for last 15 years, it helps a lot. Talking about franchise, I think they're very sweet guys. That's a good part about Rajasthan Royals as a franchise, that they're the best people to work with. Regarding BCCI, I think there has been a very good team here this season from BCCI. I would tell you personally about Rajiv sir and Jayesh, the best mentors I've ever done in my life. The kind of independence that they give their team to work with. It's been a great season to work on, and it's an amazing, amazing team to be a part of. The great thing about him is that he gives full liberty. Park has seen like the team bonding that we have. So उसकी वजह से what happens कि everyone is like very familiar with each other. बहुत सारे लोग आज जब मुझे दूसरी फ्रेंचाइज में मिलते हैं या BCCI में मिलते हैं जो स्पार्क के इंटर्न थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्पार्क ने क्या किया। I can take comfort in the fact that Jayesh sir and Rajiv sir are always there for me and Bhavik, and they've helped us every step of the way and they've supported us with every issue we have faced. मैं थैंक्स कहना चाहूँगा राजीव सर को और जयेश सर को, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प करी इस चीज़ को समझने में। आई एम रियली ग्रेटफुल टू जयेश भैया। ही नोज हु कैन बी पुश्ड, कितना पुश किया जा सकता है, कितना उसको समझाया जा सकता है। राजीव सर, उनके लिए तो जितना गौर था मैं, ही इज़ लेजेंड। जिस तरह से वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब आपकी हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इतना स्मूथ बना देते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि ये सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट भी थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव gotten with Spark. Spark, I think, is the perfect place to learn about venue operations. Rajiv sir has built, a very stable organization that way, that they are very clear what they want, they are very clear what they can give, and they are very clear how they want to do it.
है।